Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're all doing well. And this week, especially these 4 sessions are for titration. Practical paper 3, the most important and obvious thing, inshallah, in your exam is titration and salt analysis. So let's work together to have a better understanding of titration, what exactly the titration is, how many types of titration, what are the key things that we need to consider while performing the experiment. And once you have that, values, how to draw the table, and from the table, what are the, key thing to consider while drawing the table, how many values, how many times you should repeat your titration, what is the criteria of the rough titer, फिर जो हम actual titration करते हैं वो कैसे करनी है, and then further calculations is another challenge. So in today's class, we will try to understand the basic concept of titration, and then of course, we will learn how to solve the actual past paper questions. So I have just sent an important document in the group. I want everyone to check, and I will open that document here to save our time. उसी के ऊपर मैं editing कर दूंगा और highlight करूंगा so that आपके पास ये document तो आगे आवे, right? So let me join with this device and let's get started. Okay, ji, where is our folder? So where is our folder? Now we all know that titration is actually always, it's a quantitative analysis technique. Quantitative analysis और qualitative analysis होते हैं हमारे पास practicals में. In quantitative analysis, हम किसी भी चीज की quantity reduce करते हैं कि how much is required to neutralize the other substance. Whereas in qualitative analysis, हम लोग unknown substance को identify करते हैं. The salt analysis is the prime example of qualitative analysis, like what exactly is there in the unknown solution. Ready, everyone? Am I audible? And screen is visible? All right. So as I mentioned, as you know that we have normally 3 questions in the practical exam, और उसमें most of the time, I mean, you never know कि examiner क्या दे दे आपको in coming session, but 99% inshallah आपको titration ही आता है. But titration भी कोई एक चीज तो नहीं है ना. Titration में we have variety. We have simple acid-based titration, neutralization. We have redox titration, in which we add camenophore most of the time, or we have iodometric titration, which is an example of redox titration. So let's get started, guys. This is called volumetric analysis. Another important document. ये बहुत मजे की चीज है. काफी टाइम से मेरे पास और टाइट्रेशन के लिए मैं इसी डॉक्यूमेंट को खुद भी यूज करता हूं पहले, और ऑफ कोर्स आपके लिए एक डिटेल, अगर किसी को टाइट्रेशन की एक एक चीज करनी है तो दिस इज द डॉक्यूमेंट व्हिच यू शुड रीड before going exam hall. So volumetric analysis or titration. Titration में हम करते क्या हैं? If you just look at the page, the same page, the apparatus, the basic apparatus that is required to carry out the titration is we need conical flask. What is it? This is called conical flask. In the conical flask, we add our analyte. Analyte वो चीज होती है which is unknown, जिसकी concentration is unknown to be measured, जिसको हम find out कर रहे हैं. In the conical flask, we take analyte. Analyte किस चीज को कहते हैं? Whose concentration is unknown, correct? And then to the same conical flask, in some titrations, we add indicator. Why do we add indicator? Because indicator tells you that what is the end point, how much of the solution in the burette is required to neutralize whatever is present in your conical flask. So indicator, by the change of its color, हमें बता देता है कि now stop adding the solution from the top. Everything in the conical flask has been neutralized, has been used up, right? But not in all of the titrations, because we know that in redox titrations,
where we use KMnO4 as one of the reactant at the top. जब हम KMnO4 use करते हैं यहाँ पे burette में, तो there is no indicator in the titration experiment. Why we don't use any indicator in redox titration, especially when we are using potassium manganate? Because KMnO4 itself is a colored substance, so it's a self indicator. KMnO4 का कलर होता है पर्पल, इट्स पर्पल इन कलर. तो आप पर्पल चीज को ऊपर से ऐड कर रहे हो, जैसे नीचे आएगी कलरलेस हो जाएगी. आपने और ऐड किया पर्पल, फिर कलरलेस हुआ, और ऐड किया कलरलेस हुआ, until के पर्पल कलर remains. पर्पल कलर does not changes anymore. जब पर्पल कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब नीचे जो भी था इट हैज बीन यूज्ड अप, ऊपर से जो चीज हम ऐड कर रहे हैं वो एक्सेस में है. दैट मींस KMnO4 में no indicator is required. So let's back to the introduction to the apparatus. Conical flask में हम लेते हैं analyte whose concentration is unknown. The burette is the most accurate piece of apparatus that we use to perform the titration. It has graduation. It is sensitive up to 0.1, cubic centimeter. If it is 0.1 cubic centimeter, how many of you know the error that this particular apparatus have? इसका error कितना होगा? अगर इसमें graduation 0.1 की है, 0.1 है, उसके next वाला 0.2, फिर 0.3. What is the error in this apparatus, guys? और ये आपको पता है ये question आता है error का. And then finally we have to get the percentage error. So what is the error? किसी भी apparatus का error हमें कैसे पता चलता है? Error होता है बेटे, ओके, एरर किसी भी एपरेटस का हमने अगर पता करना है तो आपने उसकी मिनिमम रीडिंग देखनी कि मिनिमम कितने तक रीडेबल है. एज ए मेंशन, दिस पर्टिकुलर एपरेटस इज सेंसिटिव अप टू 0.1. तो 0.1 और देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रीडिंग्स एक्चुअल में लिखी हुई, ये 0.1 है, ये 0.2 और ये 0.3. 0.1 पे तो एग्जैक्ट में मेजर कर लूंगा, 0.2 पे भी, लेकिन इसके सेंटर में जो होगा उसमें हाफ एरर के चांसेस है. तो एरर होता है मिनिमम रीडिंग डिवाइडेड बाय 2. तो इसका जो एरर होगा वो होगा ±0.05. सो एरर किसी भी एपरेटस का होता है इसकी मिनिमम ग्रेजुएशन डिवाइडेड बाय 2, राइट. फिर अगर हमने इसका किसी भी सैंपल का परसेंटेज एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज एरर होता है एरर ऑफ दैट एपरेटस. फॉर दिस इट इज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, कि आपने कितना सैंपल मेजर किया था. लेट्स से मैंने 20 cm³ मेजर किया था, टाइम्स 100, राइट. ये है जनरल मेथड टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. बट सम टाइम इसी एक्सपेरिमेंट, इसी एपरेटस में आपको पता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो वी मेजर द रीडिंग ट्वाइस. कैसे हम ट्वाइस मेजर करते हैं? हम इनिशियल रीडिंग भी नोट करते हैं ना, जब हम टाइट्रेशन में हम ब्यूरेट के अंदर अपना एसिड ऐड करते हैं तो हम उसकी इनिशियल रीडिंग भी नोट करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम. फिर लेट्स से इतना वॉल्यूम यूज हुआ टू रीच द एंड पॉइंट, तो हमने उसका फाइनल वॉल्यूम भी नोट किया. तो बेसिकली ये इनिशियल है, ये फाइनल है. बेसिकली हमने 2 टाइम रीडिंग ली, 2 टाइम्स. तो 2 टाइम रीडिंग में हमने देखा कि 20 cm³ ऑफ द solution from the burette has been added to the conical flask. अब क्योंकि हमने रीडिंग ट्वाइस मेजर की है तो इसका एरर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. लेकिन कुछ ऐसी चीजें डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम सिर्फ 1, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप मेजरिंग स्केल है, बैलेंस है, उसके ऊपर आपने रखी जो भी चीज मेजर कर रही है, तो उसका एरर तो उसमें तो एक ही बार मेजर किया ना हमने 2 टाइम तो रीडिंग ली नहीं. बट जब भी हम 2 टाइम इनिशियल और फाइनल लेते हैं तो आपने उस एरर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग टाइम्स 100, you'll get the percentage error. Correct? Okay. अब whatever we take inside the burette में हम क्या लेते हैं? Any solution of known concentration. जो known concentration का solution उसको हम ऐड कर रहे हैं conical flask में, उसको हम कहते हैं टाइटर. क्या कहते हैं? टाइटर is the solution of the known concentration. यहाँ पे कई इसमें होगा. So बहुत मजे की चीज है. So what are the success criteria? उसको कहते हैं, आपको पता क्या होना चाहिए? You should know the following terms. We know the analyte. Analyte क्या चीज है? अभी मैंने बताया, which is being observed, unknown, जिसका solution हमें पता ही नहीं है. Standard solution generally वो भी होता है titrant, standard solution को हम ये भी लिख सकते हैं something that with a known concentration.
तो ये पेपर 5 में A2 में ज्यादा पूछता है अबाउट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, AS में कम ही पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है वो। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, एनालाइट अननोन कॉन्सेंट्रेशन। टाइटर वो चीज होती है जब हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं। अभी हम टाइट्रेशन कर रहे थे ना स्कूल में, जो लोग अपने अपने स्कूल्स में कर रहे हैं, जब हम टेबल ड्रॉ करते थे तो पहले टेबल में हम क्या लिखते थे, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इन सीएम क्यूब। अभी मैं आपको टेबल बनाने भी सिखाऊंगा। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन सीएम क्यूब, और फिर थर्ड हम लिखते थे टाइटर। वॉल्यूम यूज भी एक्सेप्टेबल है, बट टाइटर इज द एक्चुअल वर्ड। टाइटर वो वॉल्यूम होता था जो इन दोनों का डिफरेंस होता था। ऐसे ही करते थे ना। फिर जो दो बिल्कुल क्लोज वैल्यूज होती थी, आई मीन विच डू नॉट डिफर मोर देन 0.1, जो 0.1 या उससे कम डिफरेंस होता था वो हमारी कंकॉर्डेंट रीडिंग्स होती थी, और उन्हीं को हम मीन में कंसिडर करते थे। मेक सेंस एवरीवन? So far, what we have learned is that titration is a reaction in which it's basically a quantitative chemistry का एक important experiment है titration. We have variety of type of titration. We have acid-base titration. We have redox titration, and we have iodometric titration. ठीक है, ये बेसिकली iodometric भी redox में आती है। एसिड बेस टाइट्रेशन में सिंपली वो कोई भी एसिड ले लेगा और उसको अननोन एल्कली से रिएक्ट कराएगा, और सिंपल इसकी टाइट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम हमें नोन होगा। ये हम IGCSE लेवल्स में भी कर रहे थे। रीडॉक्स टाइट्रेशन में एज ए मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आयरन 2+ और आयरन 3+ का रिएक्शन कराएगा विद KMnO4, राइट, MnO4 मैंगनेट आयंस के साथ। ये सेम क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी इक्वेशन बैलेंस भी की, और आयोडोमेट्रिक में ऑफ कोर्स स्टार्च इंडिकेटर और आयोडीन हम ऐड करते हैं। सो कैन वी रीड some important points here to understand a better version to set a strong base. So endpoint क्या होगा? What is endpoint, guys? Endpoint is the neutralization point, and it has very, high importance in titration. क्योंकि endpoint वो point होता है when the exact amount of the titer has been added into this conical flask, or even one extra drop from the burette can change the result. अगर ऊपर से आपने एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड कर दिया और आपकी वो रीडिंग में आ गया, यहाँ पे रीडिंग में तो आएगा क्योंकि ऊपर से तो ड्रॉप निकल गया, तो इवेंचुअली जो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स होंगे वो ठीक नहीं आएंगे। सो टू हैव अ एक्यूरेट एंड पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हाउ वुड यू गेट द एक्यूरेट एंड पॉइंट देन, बॉयज एंड गर्ल्स? कैसे लेते हैं हम एक्यूरेट एंड पॉइंट? हाउ डू यू नो दैट योर टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट वेंट परफेक्टली? यस, जीनिया इज करेक्ट। ड्रॉप वाइज हम ऐड करेंगे, बट हाउ डू वी नो कि ये ड्रॉप वाइज ऐड करने से भी रिजल्ट्स ठीक आए हैं या नहीं? ओके, आपने ड्रॉप वाइज ऐड किया, आमना का आंसर भी ठीक है कि इनिशियली व्हेन यू आर, पहले तो आपने रफ टाइट्रेशन कर ली। रफ टाइट्रेशन में क्या करेंगे कि आपने यू गेट अ नोन कॉन्सेंट्रेशन। इन रफ टाइट्रेशन सबसे पहले तो हम करते हैं रफ टाइट्रेशन, है ना। आपने मैयट वॉल्यूम ले लिया इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, और हमेशा टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट मैयट वॉल्यूम किससे ट्रांसफर करना है? थ्रू पाइपेट। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्यूरेट से करेगा, सॉरी उससे करेगा, मेयरिंग सिलेंडर से। इनएक्यूरेट होगा, आई मीन जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएंगे। पाइपेट इज द एक्यूरेट पीस ऑफ एपरेटस, मेयर एग्जैक्टली अप टू 25.0 cm क्यूब, राइट। जो ब्यूरेट जो सिलेंडर होगा, इट कांट मेयर इन डेसिमल्स, ठीक है, वो लाइक एक्यूरेट नहीं होगी। सो यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने उसमें इंडिकेटर भी ऐड कर दिया। नाउ यू स्टार्ट एडिंग, यहाँ से आपने टैप रिलीज किया, यू स्टार्ट एडिंग solution into this. आप swirl कर रहे हो, and what is the purpose of this white tile? The purpose of the tile is to observe. Again, हम तो स्कूल में आप लोग कर रहे होंगे, I don't know आप लोग white tile रखते थे या नहीं। There should be a white tile to see, excellent, to see the exact color change. क्योंकि एक हल्का सा भी जैसे ही कलर चेंज आएगा, हो सकता है हमने 3 ड्रॉप्स एक्स्ट्रा ऐड करके फिर हमें नजर आया हो अब तो कलर चेंज हो गया, बट व्हाइट टाइल होगी तो the background will be transparent. So we can observe the sharp color change, sharp endpoint. So you measure the exact volume of whatever is required to neutralize whatever is inside. Okay. So the purpose of white tile is to observe the sharp endpoint. Right? क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशंस तो हो जाती हैं। Most of us struggle to further answer the question related to that titration experiment. I have a detailed copy on that as well, so you don't worry about those who are struggling with titration or any experiment. But your presence and
your assignments matters a lot. मैं आपको कुछ readings दे दूंगा titration की. I have like multiple readings, वो आपको मिल जाएंगी. आपने वो जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर इन्हीं पैटर्न पे सॉल्व करने होंगे. ड्राइंग द टेबल आपको पता है 7 मार्क्स है, तो उस पर भी हम डिटेल में जाते हैं. बात हम क्या कर रहे थे, या रफ टाइट्रेशन. सो रफ टाइट्रेशन में आपने टैप रिलीज किया, यू कीप स्ट्रेलिंग द फ्लास्क, यू फर्दर ऐड, आप स्पीड से ऐड कर रहे हो. जैसे आपको लगा कि अब थोड़ा सा कलर चेंज आ रहा है, वो रिमेन हो रहा है, तो यू गो ड्रॉप वाइज. और आपने आइडिया लगा लिया कि फॉर एग्जांपल if this has like 25, if I add 18.7 cm cube, तो 18.7 पे the color change is like permanent color change. Okay. अब next time when we do the accurate titration, तो फिर हम क्या करेंगे? We'll take the same volume of the analyte into the conical flask again, neat and clean conical flask. Okay, conical flask से ले लिया आपने, इंडिकेटर ऐड कर लिया. नाउ सिंस इनिशियली जो रफ टाइट्रेशन आई थी वो 18.7 थी, अब आप क्या करोगे, आप 5 आपने ओपन किया, 5 ऐड किया, स्ट्रिल किया, फिर 3 और ऐड कर दिया, स्ट्रिल किया, आप 1450 तक जाओगे स्पीड से. बट 3-4 cm क्यूब पहले यू गो ड्रॉप वाइज किया, स्ट्रिल किया, सो दैट यू मेजर द एग्जैक्ट कलर चेंज. इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर रफ टाइट्रेशन का जो वॉल्यूम है should not differ more than 1 cm cube than the actual titration. For example, आपका रफ टाइट्रेशन आया है 18.7, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक्चुअल जो आए वो 15.2 आ जाए. नॉट पॉसिबल. 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे, ये पता होना चाहिए आपको. This would be either your rough titration is like very rough, or your accurate is not accurate. Okay, so the point which I wanted to make here is that the actual titration and rough titration must not differ by 1 cm cube. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर 1 cm cube का मतलब तो ये भी हो सकता है कि rough titration is 18.7, तो our actual can be 17.7 or 19.7, because both differ by 1 cm cube. So which one do you think, or both are accurate, or which one do you think is more accurate, or which one is not accurate? If a rough titration is 18.7, can a accurate titration be more than that? हो सकती है उससे ज्यादा? नहीं हो सकती ना. No. So 1 cm cube का मतलब ये नहीं है कि आप 1 cm cube आगे चले जाएं. It should be less than 1. मतलब 1 cm cube या उससे कम का डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस कम हो. मतलब अगर रफ 18.7 है तो एक्चुअल 17.7 से आगे होनी चाहिए. 17.7 तो बाउंड्री मैंने दे दी ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना 19 वाली गेम. तो 17 से आगे होनी चाहिए. करेक्ट. ओके, नाउ यू स्टार्टेड डूइंग titration, and Xenia said, and Amna said कि sir we should do drop wise when it comes to actual titration. Okay, drop wise करनी है. फर्स्ट टाइट्रेशन रिजल्ट आ गया 17.7. सेकंड आ गया बेटे मेरा, चले मैं टेबल ड्रॉ कर लूं यहाँ पे. रफ टाइट्रेशन मैंने ले ली 18.7, 0, 2 decimal places. I hope you all know how to draw the table. For how many marks? For how many marks? 7 marks. तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? ऑन एवरेज 16 to 18 मार्क्स. इससे कम भी हो सकता है. तो 7 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं रफ टाइट्रेशन. और रफ टाइट्रेशन okay. So see, these are the readings where we are going to record the readings. Here we have experiment 1, experiment 2, experiment 3. अच्छा, आपने पहले से टेबल ड्रॉ कर भी सकते हैं. ये मेरा experiment 1 है, this is my experiment 2, okay, this is my experiment 3. Okay, so final burette reading पहले लिखेंगे हम. रीडिंग /cm cube बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी गो इनिशियल burette reading /cm cube is extremely important. And finally the titer /cm cube will give you 1 mark every single time. और आप एक फोर्थ कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स. राइट. अच्छा, imagine initial burette reading is 0.00, 2 decimal places. अगर आप हर बार 2 decimal places लेंगे, I'll explain, Xenia, don't worry. No, we don't consider rough, by the way. We don't consider rough in that. Rough is just to have an idea where exactly it can go permanent color change.
right? Okay. So question मेरा यहाँ पे आप सबसे ये है, you all are senior citizens of AS A levels chemistry, कि can we start our titration every single time with 0.00 cm cube? Is it good to start with 0.00 cm cube? Okay, both answers are in negative. Could you please explain why? Anyone? I would love to hear the answer. So, two students said, sir, no, we can't have initial burette reading as 0. It हो भी सकती है. There's no, उसमें कोई वो चीज नहीं है. But should it be 0.00 every single time? Condition नहीं है. आप लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहें, doesn't matter. But when we are doing the titration, yes, when we are doing the titration with any colored compound, burette में क्या है? वही colored compound है. क्या है? KMnO4 है या कुछ भी है जो colored है. तो 0 अगर आप लेगो तो 0 तो आप रीड ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो colored है. एरर चांसेस बढ़ जाएंगे ना. तो when there is a colored substance in the burette, do not start your initial reading with 0.00. Any number above 0. सबको समझ आ गई बात? क्यों नहीं 0 लेंगे? बिकॉज वो जो आपका है लाइक, क्योंकि सब्सटेंस इज कलरफुल, तो ग्रेजुएशन तो आपको नजर ही नहीं आ रही ना भाई. गेस करोगे ना तुम लोग, तुक्का मारोगे, तो तुक्के से तो फिर एरर चांसेस और भी बढ़ जाएंगे ना. बट उसके अलावा इफ इट इज कलरलेस यू कैन, इट्स फाइन टू स्टार्ट विद 0.00. ओके, सो हमारा आ गया जी. दिस वाज 18 पॉइंट, अच्छा रफ टाइट्रेशन 18.7 थी. लेट्स से मेरी जो फाइनल टाइट्रेशन आई वो 17.20 आई. यहाँ पे मेरे पास आ गया 17.80 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 70. मैं सारी 00 से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? 17.25. ओके, सो 17 हम 30 कर लेते हैं. 0.00. नाउ टाइटर तो सब में, क्योंकि 0 लिया हुआ तो टाइटर तो सब में वही आएगा. टाइटर होता है फाइनल माइनस इनिशियल. सबको विजिबल है ना ये बॉक्स? 17.80 आएगा. अब इसका एवरेज कैसे लेंगे? कुड यू प्लीज गेट मी द एवरेज? हाउ वुड यू गेट द मीन टाइटर गाइस? नॉट 20 सेकंड, 10 seconds to get the mean tighter. स्टार्ट बस यही है. सारी इंपॉर्टेंट चीजें आई फील मैंने आपको बता दी हैं, बट जब एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीजें आएंगी. सो जीनियर सेड, सर 17, सब लोग एग्री करते हैं ना मीन निकालना, तो इट्स नॉट बिग डील बाय द वे. वेल डन जीनियर. सबका 17.3 आ रहा है. मीन निकालते कैसे? मीन निकालते हैं टोटल रीडिंग्स, all the readings 17.20 plus 17.80 plus 17.30 divided by total readings. तुम जीनियर ने कहा सर 17.30 जीनियर. Is this your average? 17.43. Okay. तो जीनियर का डिफरेंट एवरेज क्यों डिफरेंट आ रही है फिर? Why is different? वैसे 30 आ नहीं सकती ना. थोड़ी सी मैथ तो मेरी भी ठीक है, क्योंकि एक एग्जैक्ट 30, तो हाउ कैन इट बी 30? सो इट सेज 17.43. सब लोग एग्री करते हैं मुझसे? एग्री? इज दिस द मीन टाइटर गाइस? बट यू नो व्हाट, दिस इज अ रॉन्ग मीन टाइटर. दिस वॉन्ट वर्क. एग्जामिनर देखते ही आपका 1 मार्क काट लेगा जब आपने ये वाला मीन टाइटर लिखा होगा. द प्रॉब्लम विद दिस मीन टाइटर इज, yes, the problem with this mean titer is, if you look at all 3 titer, this is 0.2, okay, this is 17.2, this is 17.8. how much they differ? 0.6, which means there is a huge massive 0.6 is a massive difference when it comes to titration, because you have added like too much extra or fewer drops in the first or extra drop in the second experiment. That means we have to repeat it for the third time. So जब हमने third time किया, तो third time हमारे जो results हैं, it are quite similar to the first experiment. That means the experiment 2 was anomalous. You should not consider any reading, any titer which exceeds from 0.1. So experiment 1 and 3, they are your concordant results. Concordant.
the values which do not differ by more than 0.1. 0.1 से ज्यादा डिफरेंस करेंगी तो वो कंकॉर्डेंट नहीं है, वो आपने मीन में नहीं डालनी। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? यस, आप ये पूछ सकते हैं कि सर अगर हमारी सेकंड वैल्यू 17.3 आ जाए, नो नीड टू परफॉर्म द थर्ड एक्सपेरिमेंट बिकॉज यू आर गेटिंग द यू नो सिमिलर रिजल्ट्स। आपने फर्स्ट टाइम किया 17.2 आया, सेकंड टाइम भी 17.2 आ सकता है, 7.3 भी आ सकता है, 17.1 भी आ सकता है। तो इफ द वैल्यूज आर कंकॉर्डेंट, don't go for the third one, just do whatever the next parts are. Get the mean? Yes. So this mean is wrong. तो फिर इसका मतलब इसको निकालो, तो मीन लेते हैं 17.20 plus 17.30 over 2. So the actual mean is 17.25. Okay. Now should I distribute the marks? How examiner is going to give you 1 mark? Mark number 1 मिलेगा आपकी रफ टाइट्रेशन और एक्चुअल टाइट्रेशन में 1 cm क्यूब से ज्यादा का डिफरेंस ना हो, और वो जो एक्चुअल है 1 cm क्यूब कम हो। सो रफ का, ठीक है, रफ भी ऐसे मुफ्त में मार्क नहीं मिलने वाला। मार्क नंबर 2 मिलेगा आपको when you will put the correct unit with everything, cm cube initial titration, cm cube final titration, cm cube. Do not, there's no need to put cm cube with every value because we are already written that initial and final and titer. So second mark मिलने वाला है आपको यूनिट का। डन। थर्ड मार्क हमें मिलेगा टू राइट एवरी वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एंड फोर्थ मार्क आपको मिलेगा कंकॉर्डेंट रीडिंग्स का, और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। कंकॉर्डेंट आप फेक भी तो कर सकते हो ना, आप कहेंगे सर अब उसको क्या पता वो तो अगर 17.2 आ गया तो मैं 17.3 लिख देता हूँ। ठीक, आपको थर्ड फोर्थ मार्क मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी 3 मार्क्स होंगे वो तो एक्यूरेसी के मार्क्स हैं। हाउ डू एग्जामिनर नो सिटिंग एट द इन श्रीलंका और इन इंग्लैंड, हाउ डू एग्जामिनर नो कि इसमें क्या इसका मीन टाइटर है? उसको सब कुछ पता है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस भेजी हुई हैं लैब को, और लैब में आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले सर बिलाल ने एक्सपेरिमेंट उसी कॉन्सेंट्रेशन, उसी वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर और एयर प्रेशर में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सो एग्जामिनर नोज व्हाट द एक्चुअल रीडिंग्स आर। तो रेस्ट ऑफ द 3 मार्क्स आर फॉर एक्यूरेसी, तो यू कांट रियली फेक एंड गेट द फुल मार्क्स, बट यस यू कैन हैव द 4 मार्क्स। हमने तो 7 लेने हैं ना। तो 1 मार्क फॉर रफ, second mark, I mean, if first 2 are concordant, there is no need to get the third fake. आप एक परफॉर्म ही ना करो थर्ड वन। ठीक है, हाँ अगर आपकी पहली 2 कंकॉर्डेंट आ रही हैं और फिर भी आप थर्ड कर रहे हो, वो कहेगा इसको तो पता ही नहीं है, पर इसकी 2 कंकॉर्डेंट आ गई फिर भी ये थर्ड कर रहा है, तो इसको लगेगा कि इसने पहली 2 फेक की हुई है, ये 2 नंबर ही कर रहा है। राइट? सो इफ फर्स्ट 2 आर कंकॉर्डेंट, no need to perform the third one. But yes, if first 2 are not concordant, go for the third one. कहेंगे सर थर्ड भी नहीं आ रही, फिर क्या करें? फिर उस सिचुएशन को देख लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ भी लिख दें, आई एम इन कंकॉर्डेंट कर दें। आपको लग रहा है कि किसमें आपने एक्यूरेट किया, बस उसके साथ वाली वैल्यू लिख दे, कुछ ना कुछ बन जाएगा। हो सकता है आपसे पहले हो सकता है आपसे पहले एग्जामिनर ने भी फेक ही किया होगा, ठीक है, गोरे को बेवकूफ बनाते हैं, गोरे आर वेरी स्मार्ट, यू नो। सो आई होप आप सबको समझ आ गई ना हाउ वी शुड स्टार्ट। मेरे पास अजान हो रही है, आप सब लोग जरा नोट कर लें इसको, जो भी चीजें हैं इसको जरा देख लें और देखें कि हमने क्या पढ़ा। वी हैव डन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टाइट्रेशन बाय द वे। एटलीस्ट 90% मैंने आपको टाइट्रेशन में सब कुछ बता दिया। आगे जो गेम है वो सारी है कैलकुलेशंस की। आई नो यू गाइस स्ट्रगल विद द कैलकुलेशन, बट डोंट वरी, इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट 3-4 लेसंस यू वोंट।
All right. All right. Back to the same thing. I was just looking at a very important information right here. Again, I want everyone to look into this document. Of course, a big document with 30-40 pages. Important चीजें आप जब पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज आपको सेंस बन रही है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है. तो ये जस्ट इसमें काफी अच्छी रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं, एक्चुअल ऑल टाइप ऑफ टाइट्रेशन है. तो आई फील जिस बच्चे ने ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया ना, ऑफ कोर्स परफॉर्म तो आपने एक्चुअल अपने हैंड ऑन प्रैक्टिस तो चाहिए, बट एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न यू आर नॉट गोइंग टू struggle with the theory of the titration questions. Look at this, guys. So see what we add in the burette is the titrant, as I mentioned. अच्छा, burette के अंदर जो चीज हमने ऐड की हुई है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है. इट इज इसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन. बट वी डू नॉट नो कि हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस इज एडेड इनटू द फ्लास्क टू रीच द एंड पॉइंट. वही वॉल्यूम तो हमारा ये टाइटर है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज नोन, बट वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम इज एडेड, अननोन. बट व्हाट वी हैव टेकन इन द कॉनिकल फ्लास्क, इसका वॉल्यूम तो हमें पता है ना, बिकॉज वी हैव ट्रांसफर्ड ऑलमोस्ट 25 cm³ ऑफ दैट एनालाइट इनटू द फ्लास्क, बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन. तो गेम सारी ये है कि उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कि हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट. एंड वंस वी नो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है, इसका वॉल्यूम भी हमें पता चल गया, तो व्हाट वी कैन डू विद CV, वी कैन फाइंड द मोल्स. हमें इसके मोल्स पता चल गए. तो इमेजिन इफ इट इज H2SO4 एंड NaOH, ये ऊपर लिखा हुआ है बल्कि. सो इफ वी हैव लाइक NaOH ऊपर था, इसके मोल्स हमने निकाल लिए फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन वाज नोन, वॉल्यूम कितना ऐड किया वो भी पता चल गया. वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ द अदर रिएक्टेंट, इसके मोल्स पता चल गए, मोल्स आ गए. अब इसका वॉल्यूम हमें पहले से पता था, हमने कॉनिकल फ्लास्क में कितना लिया था. सो वी हैव द मोल्स, वी हैव द वॉल्यूम, वी कैन गेट द कॉन्सेंट्रेशन. और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितने सोल्यूशन में आई है, 25 में. फिर इससे फर्दर आगे 250 में पूछ सकता है, एंड देन mass और moles और stuff. So it is a big story, लेकिन basic understanding is extremely important. Someone just posted a question. Let me see. So Hamna says, that's an excellent question. That's an excellent question. So Hamna says, okay, sir, what do we have to measure while looking at the, meniscus reading? So lower meniscus, guys. Lower meniscus. Lower meniscus. Okay. Yeah. And if the substance is colored, तो colorless substances में you go for lower one, और colored में 0.00 fill नहीं करना and go for upper one. और वो हमेशा KMNO4 में ही आता है, right? Okay. So summary of everything is, titration is basically it's part of quantitative analysis, volumetric analysis हम इसमें करते हैं. I'll answer the question, don't worry guys. इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको. Again, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जो कह रहा है जी, इसमें हम क्या करते हैं, बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टाइप है. जर्नल उसने बता दिया है कि जर्नल ओवरव्यू टाइट्रेशन में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं. व्हाट आर वी डूइंग हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अ पाइपेट, a portion of solution of unknown concentration and put it into a conical flask. That's how we carry out the titration, and you all know how to get this. सबने किया हुआ है. Few drops of indicator for those जिनके अंदर self indicators नहीं होते हैं. Some in titration do not require indicator, and you know that what type of titrations are those. Titer, the solution. So जो हम titration कर रहे हैं उसको titer कहते हैं. Addition of adding the volume of known into unknown. By adding a standard solution of the burette from the burette slowly with constant swirling. वो आपसे पूछ सकता है कि जब आप उसमें ये चीज ऐड कर रहे हो, आपने एक चीज करनी है, क्या करना है भाई? You need to be constantly swirl your flask. Swirl का मतलब है उसको swirl कर रहे हो, ऊपर से ऐड कर रहे हो, swirl कर रहे हो, so that whatever you're adding from the top, it just thoroughly dissolve, mix हो जाए, until there is a permanent color change. That is the end point. End point को भी उसने define कर दिया. End point is the point where in the titration with a sudden sharp color change, due to indicators observed. Equivalence point क्या होता है? Equivalence point मैंने आपको इक्विलिब्रिया AS फिजिकल केमिस्ट्री में भी बताया हुआ है. Those who know, और ये इस बार आने वाली, लिख लो मेरी बात. This time in paper 2 you should expect a question on pH titration curves. pH curves याद है किसी को? pH curves, strong acid, strong alkali, strong acid, weak alkali, weak acid, flana alkali, 4 titration curves.
उसमें हमने इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल योर HCl एंड योर NaOH, व्हेन यू हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशंस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम बोथ सॉल्यूशन पे जो भी पीएच है वो पीएच है एट इक्विवेलेंस पॉइंट। और मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में कि व्हेन बोथ एसिड और एल्कली स्ट्रांग, एसिड भी स्ट्रांग है, एल्कली भी स्ट्रांग है, then at equivalence point, which is a point when you have equal volume of both solution, at equivalence point the pH is 0. कब होगी? When both are strong. When acid is strong and alkali is weak, then even if the volume is equal of both solutions, since the acid is strong, at equivalence point the pH is still less than 7 acidic, और alkali होगी तो alkaline हो जाएगा। Make sense everyone? Rest सबको समझ आ गई ये गेम? Okay. तो क्या चीजें हमने कंसिडर करनी है while to have to get close to the examiner जिसने आपसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है, so you can't fake anything, you know. So कुछ तो कलर चेंज, ऑफ कोर्स इंडिकेटर्स के हमें कलर याद रखने चाहिए। इसमें there's a list of indicators but not all of us part of our syllabus। हम आपको हाँ ये मेथाल ऑरेंज है और फेनोफ्थलीन है, इंडिकेटर्स नीचे गिवन है, तो यू कैन लुक फॉर द कलर्स एज वेल। सो यू शुड बी एबल टू क्लियरली ऑब्जर्व द एंड पॉइंट, यू नो, एंड बैलेंस इक्वेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं आ रही ना तो मसला हो गया ना, क्योंकि रेशो नहीं आएगी, रेशो नहीं आएगी तो फिर आगे कैसे काम करेंगे। और बैलेंस इक्वेशन इज नॉट फॉर द सिंपल एसिड एंड बेस। वर्क ऑन चैप्टर नंबर 6 ऑफ AS फिजिकल व्हिच सेज redox इक्वेशंस। उसकी बैलेंसिंग मैंने आपको डिटेल में कराई हुई, आपके पास नोट्स पड़े में, उसकी बैलेंसिंग हमें आनी चाहिए, राइट? And then once you know the balance equation, then you should be able to perform the calculation using mole concept, volume, concentration. The most common formula we use is this one, but you never know M over MR wala bhi sometime aaya hua। V over 24 is very less, but it's part of the moles as well, correct? इसको आप देख ले, और here we have an example। उसने इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एंड here is how, you know, आगे उसने बताया हुआ कि आप सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। So let's solve one example from the titration to develop an actual understanding कि आपको examine, it's a very basic one। So if you look at the example 1, it says in titration experiment 25 cm cube of dilute sulfuric acid reacts with 18 cm cube of 0.1 mole per dm cube। Now my question is, we have two reactants, sulfuric acid and NaOH, which one is analyte among these two? Given information में देख के बताओ, and which one is your standard solution or titer? So which one is analyte, NaOH or sulfuric acid? एनालाइट वो चीज होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन हो, मैम। सो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन, guys। Sulfuric acid is your analyte. Sulfuric acid is your analyte, okay? Because its concentration is not known. What we know is the concentration and volume of NaOH. So this is your titer of known concentration, okay? This has to be NaOH, okay? अब आगे आ जाए। What are we given? We are given with the concentration and volume of NaOH, and we are supposed to get the concentration of this। So very basic, O levels वाला, इसमें तो कुछ भी गेम नहीं है। उसने कहा आप मोल पर डीएम में करें, फिर ग्राम में करें। सबसे पहले हमने क्या किया, NaOH की इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने CV लगाया, उसके मोल्स निकाल लिए, उसके मोल से ही किसके मोल्स निकाले, NaOH के, उसके मोल से हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाले, तो इसका 2 है, इसके 1, तो इसके जितने भी होंगे वो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। तो देखो उसने इसके मोल्स को डिवाइड बाय 2 करके, दीज आर द मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Once you have the moles of sulfuric acid, अब हमने उसको क्या करना है, उसके concentration find करनी। concentration होता है N over V, but V has to be in dm cube, right? लेकिन वो V cm cube में था, अब उसको dm cube में चेंज कर लिया, देखो उसने। This is the concentration in mole per dm cube। अब मोल पर dm cube से हमने जाना है ग्राम पर dm cube में। मुझे बताओ, अगर आपके पास मोल्स हो और आपने मैस निकालना हो, मोल्स हैं और आपने मैस निकालना है, तो क्या करेंगे, हम MR से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो भी मोल्स थे मोल पर dm cube से, आज लगता है या हमारे नेबर्स में या हमारे घर में बहुत मजे की चीज बन रही है।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ओके, सो मोल पर डीएम क्यूब से हम जा रहे हैं ग्राम पर डीएम क्यूब। इस टाइम खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है ना। इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock हियर इन पाकिस्तान। सो देखो, हमने मोल से जाना है मैस में, तो मैं क्या करूं, मैं एमआर से मल्टीप्लाई करूं। रिवर्स करना है तो मैं एमआर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस टाइम वी आर मूविंग फ्रॉम मोल्स टू ग्राम, तो जस्ट डिवाइड टाइम्स इट विद एमआर। देखो उसने टाइम्स किया हुआ है पूरे एमआर निकाल के। Sense everyone? Correct. So the document is there. I want everyone to look into this as well. इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा उसने लेवल अप किया। 0.2 ग्राम, ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आपको प्योरिटी का, परसेंटेज प्योरिटी, फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टफ। सो लेट्स लुक एट दिस। ये मजे की चीज है, ये हमारे लेवल की है, ए लेवल्स वाली। 0.982 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास कुछ सॉलिड मैस है जिसका टोटल मैस है 0.982, बट वो इम्प्योर है। किस चीज का इम्प्योर? NaOH। इसका मतलब उसमें 0.98 टोटल NaOH नहीं है, उसमें कुछ NaOH है, कुछ इम्प्योरिटीज है। Was dissolved in deionized water made up to 250 cm³ of graduated flask। ठीक है, ये देखो सोल्यूशन बनाते कैसे हैं। उसने मेजर किया 0.82 एग्जैक्टली, उसको बीकर में डाला, बीकर में थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाला, उसको अच्छे से डिसॉल्व किया, और उस डिसॉल्व वाले को उसने 250 वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर किया। फिर क्या हुआ, कुछ NaOH तो ये बीकर के साथ रह जाएगा ना, बीकर के साथ अटैच हो जाएगा NaOH, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल हम योगर्ट है, योगर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो कुछ योगर्ट हमारी पिछले वाले उसमें रह जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको उसकी वॉशिंग्स भी ट्रांसफर करेंगे। सो यू वॉश दिस बीकर अगेन, add more distilled water, transfer the washing so that जो भी 9.82 ग्राम का सोल्यूशन बनाया था, it fully ट्रांसफर। फिर आपने ट्रांसफर कर दिया, मेक श्योर इमेजिन कि वो इतना सोल्यूशन बन गया। तो हमने तो 250 इतना अप टू द मार्क फिल करना है ना, तो आप अप टू द मार्क फिल करोगे बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ deionized वाटर व्हिच इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। अब इस 250 में से उसने निकाल लिया 25, और 25 की वो टाइट्रेशन कर रहा है किसके साथ? ऑफ अ टाइटर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है हमें, और जब हमने टाइट्रेशन परफॉर्म की तो दिस मच ऑफ द वॉल्यूम वाज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस मच ऑफ NaOH, which mean we now know the concentration and volume of this, so we can find the moles of HCl। C भी पता, V भी पता, और इसको करेंगे 1000 से डिवाइड, because C every time is in centimeter cube, we get the moles। अब इसके मोल्स आ गए। सेकंड स्टेप, वी शुड नो द रेशियो। अगर इक्वेशन नहीं आती तो मसला हो जाएगा ना। अच्छा, इक्वेशन का मैं डायरेक्ट भी आपको बता देता हूँ, अगर उसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ कि इक्वेशन ड्रॉ करें। आपने देखने हैं कि जो एसिड है उसके पास कितने हाइड्रोजन है और एल्कली के पास कितने OH है। अगर तो वो दोनों 1:1 है तो 1:1 है। इफ एसिड एंड प्रोटॉन्स रेशियो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ HCl H2SO4 है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन्स है? हाउ मेनी प्रोटॉन डज दिस हैव? 2। एल्कली के पास कितने हैं? वो 1। तो फिर मुझे इसके साथ 2 लगाना पड़ेगा। सो यू कैन जस्ट लुक एट, डोंट लुक एट द अदर, क्योंकि हमें तो बैलेंस चाहिए ही नहीं ना। एंड सम ऑफ द रिएक्शन हमें सिर्फ लिखनी नहीं है, हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप इफ यू वांट टू नो दिस, जस्ट बैलेंस द H and OH in both, don't balance the sulfates and sodiums and stuff to waste your time। okay, just balance the OH of alkali and H of acid, और फिर रेशियो निकाल लो। समझ आ गई सबको बात मेरी? अब यहाँ पे तो रेशियो 1:1 है भाई, तो हमने निकाल लिए। सही बता रहा हूँ, बहुत मजे की खुशबू आ रही है, आज कुछ अच्छा बना हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमने मोल्स निकाल लिए HCl के, राइट। ये मोल्स आए, इसके मोल्स से हमने रेशियो लगा ली, रेशियो 1:1 है, तो वही मोल्स आ गए बेटे NaOH के। अब ये मोल्स NaOH के आए 25 cm³ में। किस में आ गए? 25 में। तो हमने तो 25 लिया था, लेकिन हमारे पास तो ओरिजिनली ये 250 में था। सोल्यूशन तो हमने 250 का बनाया था भाई। अगर हमने बिरयानी बनाई है, बिरयानी की देग बनाई हमने, और आपको मैंने दी ये देग बना ली, और आपको मैंने दी प्लेट, और प्लेट में आ गया एक चिकन पीस, ठीक है, और लेट्स से बिरयानी है 10 kg ऑफ राइस की, और आपकी प्लेट में जो राइस आए वो लेट्स से 1 kg राइस, इतने कोई खाता तो नहीं है, 1 kg राइस आए। 1 kg राइस में एक चिकन का पीस आया आपको, तो आप बताएं टोटल 10 kg राइस में कितने चिकन पीसेस होंगे? 1 kg में 1 चिकन पीस है, तो फिर हमने 10 kg में निकालने हैं ना, क्योंकि हम तो उसमें इंप्योरिटी फाइंड कर रहे हैं 10। तो अगर 25 cm³ में इतने मोल्स हैं भाई, 25 cm³ में इतने मोल्स हैं, तो 250 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10।
देखो 250 over 25 तो ये 10 ही होगा ना। तो देखो ये 10⁻³ था, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 10⁻² हो जाएगा। Thank you, sir. Now, this is the value of the moles of actual NaOH in total of 250. NaOH के मोल्स हैं। अब NaOH के मोल से हमने उसका मैस निकालना है। तो जब NaOH के मोल से उसका मैस निकालेंगे तो सबसे पहले MR से, फॉर्मूला ये है ना, N is M over MR। सो भाई ये मेरे पास मोल्स आ गए, 250 में MR से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मैस आएगा जो एक्चुअल मैस है। कितना मैस आ गया? 0.940। That is the actual mass of NaOH in impure sample. तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे भाई? Actual mass over total mass times 100. So the percentage purity is 95.7%. You will have such question. Problem कहाँ आता है? Problem आता है 25 में तो निकालिए सही है, 250 में फिर क्या करना है? तो I think with this kind of explanation, now we all know that how to get in 250 or even 1000 or even 500. Okay, done. Yes. So this was a detailed lesson, I feel, on the titration. But yes, जब हम actual question करें, this was an actual question in my opinion. जब हम actual question करेंगे, इंशाल्लाह कल की क्लास भी titration पे है. We'll solve actual past paper question from your A levels chemistry. So prepared, review this document. कल मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.